Hello students, welcome to our channel. Last part रे हमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रो प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस 2024 को हमें सॉल्व करथिले। आज हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट रो प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन 2024 को सॉल्व करबा। तो वीडियो को एंजॉय करंतु, भल लागले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु। चलंतु हम डिस्कस करबा कॉस्ट अकाउंटिंग 2024 रो प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 रे देखिए फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर ईच बिट चूज एंड राइट सीरियली द करेक्ट आंसर्स अलॉन्ग विथ इट्स सीरियल नंबर अगेंस्ट ईच बिट। हमको क्वेश्चन नंबर 1 में 12टा क्वेश्चन करे अछि जोटी कि एमसीक्यू देती, प्रत्येक क्वेश्चन 4टा ऑप्शन देछि, से 4टा रो गोटे चूज करबा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देछि देखो ए रे वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। अभी जो ऑप्शन देछि ता भीतर कोटा गोटे लेबर टर्नओवर कॉज नुहे। ऑप्शन से जॉब डिससैटिस्फैक्शंस, बैड वर्किंग कंडीशंस, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ वर्कर्स, गुड वर्किंग कंडीशंस। हमको क्वेश्चन देछि वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। आ भितरु कोटा लेबर टर्नओवर कॉज नुहे। जदि जॉब डिससैटिस्फैक्शन थाए से बाहर की जो सेटा गोटे कॉज, बैड वर्किंग कंडीशन थे बाहर की पळे सेटा गोटे कॉज, रिटायरमेंट डेथ सेटा गोटे कॉज, बट गुड वर्किंग कंडीशन भलो वर्किंग कंडीशन से गोटे कॉज नुहे। ओके, तो हमर फर्स्ट आंसर आसीबो ए जोरा कि ऑप्शन सोची आईबी गुड वर्किंग कंडीशंस। गुड वर्किंग कंडीशंस हमको क्वेश्चन पचारला 4टा का ऑप्शन में कोटा गोटे लेबर टर्नओवर रो कॉज नुहे। तो गुड वर्किंग कंडीशंस होची लेबर टर्नओवर कॉज नुहे। ओके, नेक्स्ट बी देछि द बेसिक ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ लाइट। आम जो लाइट रो कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करू तार बेसिक ऑफ अपॉर्चमेंट कौन सदाबले जदि कि नंबर ऑफ पॉइंट्स देइबा, नंबर ऑफ लाइट्स देछि, तो ताको सेही बेसिक्स रे कैलकुलेशन करा जाय। जदि नंबर ऑफ लाइट देथियो ताले हम कोन एरिया ऑक्युपाइड बेसिक्स रे कैलकुलेशंस करथौ। ओके, तो फर्स्ट होची तार नंबर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑप्शन दीजिए प्लांट वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन दीजिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, थर्ड दीजिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो हम कौन आसो ना नंबर ऑफ लाइट पॉइंट आम के लाइट पॉइंट यूज करछे। होल डिपार्टमेंट जब 10 पॉइंट यूज होची ता भीतर मोर 2 पॉइंट्स यूज होची, 2 आउट ऑफ 10 कैलकुलेशंस कराबो। ओके, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो बी र आंसर आसीबो सेकेंड बिट जरा आंसर होची नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। Okay, next C calculation of percentage of overhead on direct material cost is a method of dash. Calculation of percentage of overhead on direct material cost is a method dash. आम जो परसेंटेज ओवरहेड कैलकुलेशन करूँ डायरेक्ट मटेरियल ऊपर सेटा कौन हमको 4टा ऑप्शन देछि एलोकेशन ओवरहेड, अपॉर्चनमेंट ओवरहेड, अब्जॉर्प्शन ओवरहेड, रीअपॉर्चन ओवरहेड। तो हमारा आंसर कौन आसीबो अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। कौन आसीबो अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इट होची सी, यार आंसर होची थर्ड बिट। ओके, नेक्स्ट डी क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग इज डेवलप टू डैश। कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप कौन पे कराइतला। फर्स्ट ऑप्शन है एनालाइज कॉस्ट, कॉस्ट को एनालाइज करेबे। सेकंड कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करेबे। थर्ड एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट। फोर्थ रिकॉर्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशंस। हमको कॉस्ट को भी एनालाइज करियर अछि प्लस कॉस्ट को कंट्रोल करियर अछि। ओके, तो थर्ड ऑप्शन दीजिए एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट। तो दीटा को अच्छी केवल कॉस्ट को एनालाइज करने कॉस्ट अकाउंट डेवलप है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने डेवलप है। दीटा को एनालाइज भी करिबो और कॉस्ट को कंट्रोल भी करिबो। ओके, थर्ड पॉइंट डी एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट। एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट ई बिट करिबो सेलिंग प्राइस रेगुलेटेड बाय। सेलिंग प्राइस किए रेगुलेट करे आगे जोटे आम जिनस तैयारी करूँ से कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट जान सारा पर सेलिंग प्राइस डिटरमिन करे। जिते पर्यटन जो जिनस तैयारी नई आम सेलिंग प्राइस को डिटरमिन कर। तो यहाँ कार कम कॉस्ट अकाउंटेंट काम राइट। तो हमको ऑप्शन देछि कॉस्ट अकाउंट्स, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट डिटरमिन कर सारा पर आम प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस। तो कैश अकाउंट्स भी नुहे सेल्स जनरल सेल्स जी न सेल्स करे से रेकर्ड करा जाए। प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट लॉस के होची रेकर्ड करा जाए। तो कार काम कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट एफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल ओके, मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, लेबर वेरिएबल कॉस्ट। आम कॉस्ट होची गोटे हूँ वेरिएबल कॉस्ट, गोटे फिक्स कॉस्ट, आउ हूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
ভ্যারিয়েবল কস্টটা ভ্যারি করে যেতে প্রোডাকশন ইনক্রিজ हो टोटल ভ্যারি কস্ট बट पर यूनिट कन्स्टांट ओके बट फिक्स कस्टा टोटल अमाउंट कन्स्टांट बट पर यूनिट चेंजेस हुए सेमी भैरिएबल किसी फिक्स थाए किसी भैरिएबल थाए आमको इनफॉरमेशन देछि भैरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑप्शन देछि भैरीज विथ वेरिएशन इन आउटपुट जेते आउटपुट अधिक इनक्रीज हो वेरिएशन सेते नो इनक्रीज द फिक्स कॉस्ट इनक्रीज नो रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट हमको पचास तो रिमेन कांस्टेंट राइट भैरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट्स ओके ऑप्शन होची थर्ड बिट एफ पर जी करिवा प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग होची टू थ्री टाइप्स होची गोटे होची प्राइमरी पैकिंग गोटे होची सेकेंडरी पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पैकिंग राइट मार्केटिंग रे पडिथिबो गोटे होची प्राइमरी पैकिंग गोटे होची सेकेंडरी पैकिंग गोटे होची ट्रांसपोर्ट पैकिंग प्राइमरी पैकिंग कोन सपोज जदि हमें कोलगेट यूज करछे कोलगेट जो ट्यूब भितर पुराइटे ताको प्राइमरी पैकिंग कह जाए सेकेंडरी पैकिंग कोटा जदि से टूथपेस्ट गोटे खोल भितर आसुची ताको सेकेंडरी पैकिंग कह जाए ट्रांसपोर्ट पैकिंग जिनसा जेटा अच्छे ताप गोटे पेटी रे जिनस आसे ताको कह ट्रांसपोर्ट पैकिंग ओके तो आमको क्वेश्चन पचार प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस फॉर ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड प्राइम कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्राइमरी पैकिंग होची मटेरियल को ट्यूब भितर पूरा कोलगेट को ट्यूब भितर तो सेटा होची गोटे पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट ठीक अच्छे जेटा हम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करूँ कल मटेरियल रिलेटेड गला तो हम प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट नुहे सेलिंग कॉस्ट नुहे से प्राइम कॉस्ट तो आंसर आसो थर्ड प्राइम कॉस्ट एच नेक्स्ट बिन कार्ड इज मेंटेन बाय बिन कार्ड किए मेंटेन करे ना स्टोर कीपर मेंटेन करे ओके जिते जिनस कुछ स्टोर कर रखिदे ताको किए मेंटेन करे ना स्टोर कीपर ओके तो देखिए को डिपार्टमेंट देछि फर्स्ट ऑप्शन देछि परचेज डिपार्टमेंट सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थर्ड स्टोर कीपर डिपार्टमेंट फोर्थ होछि प्रोडक्शन ऑफिसर तो हमें कौन लिखिबा स्टोर कीपर बिन कार्ड को रिकॉर्ड करे एच र आंसर होछि आई सॉरी थर्ड बिट स्टोर कीपर एच पर आई क्वेश्चन अच्छी आई रे फिपो मतलब फास्ट इन फास्ट आउट जो मटेरियल हमें फास्ट आसो इन फैक्ट्री रे स्टोर से हमें फास्ट आउट करवा ओके ताकि कह फिपो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू इज सुइटेबल इन टाइम ऑफ फिपो मेथड केतबेले यूटिलाइज जो प्राइसिंग रे किछि गोटे होचे प्राइस फॉल है गोटे प्राइस राइज है राइट तो जो प्राइस फॉल यहाँ आम फिपो मेथड यूज करते हो जो प्राइसटा राइज यहाँ लिफो मेथड यूज करते हो ओके तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन से रही राइजिंग प्राइस फॉलिंग प्राइस स्टेडी प्राइस एंड फ्लक्चुएटिंग प्राइस तो हमारा आंसर कौन फॉलिंग प्राइस जिते प्राइसटा फॉल होता है फिपो मेथड यूज होता है जो प्राइसटा राइज हो से लिफो मेथड यूज हुए ओके तो आंसर कौन लिखा फॉलिंग प्राइस ऑप्शन से सेकेंड बिट ओके आई पर जे स्क्रैप फास्ट देखिए स्मॉल वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बिग वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग नो रियलाइज वैल्यू नो विजुअल स्क्रैप जिनस सब खराब हो गला जो लास्ट को किसी रियलाइज होता है से गोटे कम अमाउंट आम सेल कर स्क्रैप कर किसी वेस्ट प्रॉडक्ट गुड़ाक जब आम किसी कपड़ा वाला को सेल कर से किसी मिनिमम अमाउंट देता है ओके तो फर्दर प्रोसेसिंग हो पारे ना तो फर्स्ट ऑप्शन से कौन है स्मॉल वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग हमको गोटे कम वैल्यू मिलता है आउ फर्दर प्रोसेसिंग हो न था सेकेंड बिग वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बिग वैल्यू तो केवे मिले नहीं ओके थर्ड नो रियलाइज वैल्यू स्क्रैप किसी रियलाइजेबल थाए नो विजुअल वैल्यू तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आसो स्मॉल वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग स्मॉल वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग स्मॉल वैल्यू विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्शन सोची आई ओके के नेक्स्ट जानिए पीस रेट सिस्टम ऑफ वेस्ट पेमेंट इज मोस्ट सुइटेबल पीस रेट हम दुटा सिस्टम अच्छी गोटे टाइम रेट मेथड अच्छी और पीस रेट टेलर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम अच्छे और टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अच्छे आमको पीस रेट सिस्टम कौटी अप्लाई करा जाए से पचार तो पीस रेट सिस्टम वेस्ट पेमेंट इज मोस्ट सुइटेबल व्हेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन डिफिकल्ट टू मेजर कर केते क्वांटिटी है व्हेयर आउटपुट ऑफ द वर्कर इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल आउटपुट ऑफ पूरा कंट्रोल बाहर व्हेयर द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन कैन बी प्रिसाइजली मेजर जोटी क्वांटिटीज इजिली आम मेजर कर तो सेठी आम कौन करिया पीस रेट सिस्टम को यूटिलाइज करिया ओके लास्ट ऑप्शन था व्हेयर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन क्वांटिटी नहीं
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मोर इंपोर्टेंट यहाँ भी नुहे तुम थर्ड ऑप्शन आसो बट क्वांटिटी ऑफ वर्क डन कैन बी प्रिसाइजली मेजर जो आम इजिली क्वांटिटी को मेजर कर पार से पीस रेट सिस्टम को एप्लीकेबल करिया तो के रे थर्ड बिट where the quantity of work where the quantity of work done can be precisely measured. Okay, JKL जोटी आम क्वांटिटी इजिली काउंट कर पार से पीस रेट सिस्टम की यूटिलाइज कर नेक्स्ट देखिए एल व्हेन टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम आमको जी स्टैंडर्ड टाइम देता है आम 50% टाइम ताठू कम सेव करता अर्निंग पर आवर इज हायर अंडर जो अर्निंग पर आवर मिले को अंडर बेसिक से दिया जाए फर्स्ट देखिए हाल्सी प्लान रोहान प्लान हाल्सीवेयर प्लान और टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ओके मैं जानते 50% टाइम सेव कोटी दिया जाए हाल्सी प्लान तमाने हाल्सी रोहान प्लान 30% तो आम कोटी आसो सेकेंड पार्टा रोहान प्लान ओके रोहान प्लान एल ऑप्शन होची सेकेंड बिट ओके इतना क्वेश्चन नंबर 1 जोटा कि आमको 12टा क्वेश्चन करार आउ 12टा क्वेश्चन कंपलसरी तो इच क्वेश्चन उठे जाऊँ 1 मार्क आमको 12टा ऑप्शन देता 12टा क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 4टा ऑप्शन देता से 4टा ऑप्शन आम गोटे को सिलेक्ट करार अच्छे ये आम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करें चलतु अब क्वेश्चन नंबर 2 करवा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन अंडर इच बिट आमको 12टा बिट करार अच्छी प्रत्येक क्वेश्चन वेटेज होची 1 मार्क आउ प्रत्येक 3-3टा ए बी सी डी कर 4टा बिट देती प्रत्येक 3टा बिट अच्छी ओके तो फर्स्ट हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 सेंटेंस प्रत्येक क्वेश्चन को 1 सेंटेंस लिखबार अच्छी एबे ये क्वेश्चन आसुनी एबे कहीं आमको एमसीक्यू दूसरी ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज प्राइम कॉस्ट कौन ना एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आम 3टा कॉस्ट को आम ऐड करछे तो आमको कौन बाहर है प्राइम कॉस्ट बाहर है ओके तो देखिए से लिखाई द एग्रीगेट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट आमको गोटे सेंटेंस लिखा देखिए तो से लिखियो प्राइम कॉस्ट कौन पचार राइट व्हाट इज जॉब कार्ड कौन ना डिफरेंट जॉब रे केते टाइम स्पेंड कर जॉब कार्ड रिकॉर्ड करता है ओके जॉब कार्ड इज ए टाइम बुकिंग डॉक्यूमेंट व्हिच शोज द टोटल टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर्स ऑन डिफरेंट जॉब्स ओके डिफरेंट जॉब रे डिफरेंट वर्कर केते टाइम स्पेंड कर जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर जाए कौन कह जाए ना जॉब कार्ड कह जाए ओके डिफरेंट वर्कर डिफरेंट जॉब रे केते टाइम स्पेंड कर जॉब कार्ड रिकॉर्ड करता है ओके बुझा 1 वर्ड लिखा देखिए सॉरी गोटे सेंटेंस नेक्स्ट व्हाट इज ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड व्हाट इज ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड गोटे ओवर एब्जॉर्प्शन अच्छी गोटे अंडर एब्जॉर्प्शन अच्छी दु प्रकार कस्ट अच्छी गोटे ओवर एब्जॉर्प्शन गोटे अंडर एब्जॉर्प्शन जदि एक्चुअल ओवरहेड ठारू जदि अधिक अमाउंट खर्च होता है से ओवर एब्जॉर्प्शन कह जाए जदि एक्चुअल अमाउंट ठारू लोअर अमाउंट अल्प लेस देन खर्च होता है आम कौन कर अंडर एब्जॉर्प्शन ओके बट आमको कौन पचार व्हाट इज ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड when the amount of overhead absorbed is more than the actual amount overhead incurred जदि आम जी अमाउंट स्पेंड एक्चुअल ओवरहेड कस्ट खर्च करवा कथा जब आम अधिक खर्च करचे आम ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कही ओके नेक्स्ट बी रे करिया रेक्टिफाई द अंडरलाइन द पोर्शन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आमको रेक्टिफाई करिया अछि जोटा को अंडरलाइन करिछि ताको रेक्टिफाई करिया अछि तो नेक्स्ट एटा एबीसी लिखिछि ए रो बिट 1 एटा ए रो बिट 1 एटा ए रो बिट 2 एटा ए रो बिट 3 देन बी रो आईवी आसीबो बी रो आईवी आईवी रे कोन लिखिछि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जदि हम प्राइम कॉस्ट रे प्लस करू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर लिखिछि टोटल कॉस्ट एटा हमर कोन बारे फैक्ट्री कॉस्ट बारे ओके प्राइम कॉस्ट रे जदि हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करियो तो हमर आंसर होछि फैक्ट्री कॉस्ट कौन बारे फैक्ट्री कॉस्ट ओके डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कौन वाला प्राइम कॉस्ट जितने को फैक्ट्री रिलेटेड आइटम को जब ऐड करेंगे हम कौन बात है फैक्ट्री कॉस्ट बात है ओके तो टोटल ऊपर अंडरलाइन नीचे तो टोटल कटे कौन लिखिए फैक्ट्री कॉस्ट सेकेंड टाइम रेट सिस्टम में हेल्प लोअरिंग कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन
डायनामिक सिस्टम हेल्प करे जदि लोअर कॉस्ट होता है प्रोडक्शन इंक्रीज हेले ना से कौन है पीस रेट सिस्टम था कौन था पीस रेट सिस्टम डायनामिक सिस्टम रे ऑनलाइन थे तो कौन लिखा पीस रेट सिस्टम बी लिखा पीस रेट सिस्टम ओके पीस रेट सिस्टम जितना प्रोडक्शन कम होता है तो आम पीस रेट सिस्टम को अप्लाई करता हूँ नेक्स्ट VI पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव चेंज इन प्रोडक्शंस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट फिक्सड है बट पर यूनिट भारी करता है फॉर एग्जांपल जदि हम एग्जांपल हम घर रेंट 20,000 रोचे आम 4 जन को रोचे तो 5,000 पड़ा जब आम से 10 जन रहा तो 2,000 पड़ा तो पर यूनिट भारी करता है पर यूनिट पर टोटल अमाउंट कौन होता है से कन्स्टाट है अब ये आम कौन पचार फिक्स कॉस्ट रिमेन्स डैश इरेस्पेक्ट चेंज ऑफ प्रोडक्शन जब अधिक प्रोडक्शन होची या प्रोडक्शन कम होची कौन भैरी करता है ओके तो ये कन्स्टाट लिखी कौन लिखा भैरीज वैरिज ओके नेक्स्ट सी बिट करिबा सी रो बी डबल आई डैश कॉस्टिंग इज सुइटेबल फॉर रेडीमेड गारमेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स पचाछि को कॉस्टिंग रेडीमेड गारमेंट पई सुइटेबल त माने को कॉस्टिंग ना बैच कॉस्टिंग ओके तो प्रत्येक बैच वाइज जिंस सेठी तयारी हेटा तो लिख दो बैच कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल फॉर रेडीमेड गारमेंट्स ओके नेक्स्ट बी ट्रिपल आई reordering level is equal to maximum consumption into dash reordering level of formula पचारछि तो reordering level of formula करो ना maximum consumptions into maximum reorder period तो सब फॉर्मूला के मान रखना दरकार तो फॉर्मूला भी fill in the blanks हाउस राइट तो reordering level of formula करो ना maximum consumptions into maximum reorder period तो fill in the blanks से कौन लिखियो maximum reorder period जदि मैक्सिमम कंजम्पशन है मैक्सिमम रिऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करवा तो आम कौन बाहर मैक्स रिऑर्डरिंग लेवल नेक्स्ट देखिए सैलरी पे टू जनरल मैनेजर को आम जब सैलरी देले इज एन आइटम ऑफ डैश एक्सपेंसेस कौ टाइप एक्सपेंसेस जदि सैलरी पे कर जनरल मैनेजर तो ऑफिस रिलेटेड तो आम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कह ओके जदि फैक्ट्री मैनेजर को उठा तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर कौन जनरल मैनेजर को तो यहाँ हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस IX ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी लिखिपार ऑफिस एक्सपेंसेस नेक्स्ट डी डी करवा एक्स द पर्सन हु मेंटेन स्टोर ट्रेजर जो पर्सन स्टोर ट्रेजर मेंटेन कर स्टोर कीपर कह कॉस्ट अकाउंटेंट भी कहीपर कॉस्ट अकाउंटेंट ओके स्टोर कीपर कॉस्ट अकाउंटेंट नेक्स्ट the rate of changes in composition of the labor force of organizations लेबर जो चेंजेस हुए ताको हमें कौन कहता हूँ लेबर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस हुए ताको हमें लेबर टर्नओवर कहता हूँ ओके परसेंटेज चेंज द लेबर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज लेबर टर्नओवर तो हमें कौन लिखा लेबर टर्नओवर ओके नेक्स्ट एक्स डबल आई अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट अलॉटमेंट करिया ओवरहेड कॉस्ट को अलॉटमेंट कले ताको कौन कह जाए अब्जॉर्प्शंस ऑफ ओवरहेड ताको कौन कह जाए अब्जॉर्प्शंस ऑफ ओवरहेड ओके तो ये 2 नंबर क्वेश्चन 12टा बिट थिला लिख पारियो प्रत्येक ए बी सी डी प्रत्येक 10 ऑप्शंस थिला फर्स्ट होची वन सेंटेंस लिखियार अछि बी रे थिला वन वर्ड रे आंसर लिखियार अछि थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स थिला सॉरी हाँ फिल इन द ब्लैंक्स थिला आ 4 नंबरटा प्रत्येक वर्ड रे गोटे वर्ड रे लिखिबार अछि ओके तो ये थिला क्वेश्चन नंबर 2 चलंतु अब एक क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करिवो क्वेश्चन नंबर 3 दिछि आंसर्स इन 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सीरियली नॉट मोर देन 30 वर्ड्स इच प्रत्येक क्वेश्चन को आम 30 वर्ड्स भितर लिखार अच्छे और प्रत्येक क्वेश्चन गोटे होची 2 मार्क और हमको 10टा क्वेश्चन करार अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन जदि ओवरहेड कॉस्ट को आम प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट रे आलोकेशन बा अपॉर्चमेंट करते से टर्म टाक आम कौन कहते प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओके ओवरहेड कॉस्ट को डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट को जब आम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट रे आलोकेशन बा अपॉर्चमेंट करते कह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट होची व्हाट इज डायरेक्ट लेबर आवर मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर मेथड कौन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को जब आम डायरेक्ट लेबर आवर सहित डिवाइड करछे ताकू कहते डायरेक्ट लेबर आवर मेथड
फैक्ट्री ओवरहेड रे सपोज 1 लाख रुपीज खर्च होती आउ 20,000 आवर्स काम होती तो 1 लाख को 20,000 डिवाइड कले पर आवर आसला 5 डायरेक्ट लेबर आवर कह जाए ओके। व्हाट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट कौन ना कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आम कॉस्ट को डिटरमिन करते हो कॉस्ट शीट रे डिफरेंट हेड्स कॉस्ट है जस्ट लाइक तुम प्राइम कॉस्ट है फैक्ट्री कॉस्ट है ऑफिस कॉस्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये आम गोटे प्रोडक्ट टोटाल कॉस्ट को डिटरमिन करते हो कॉस्ट शीट कह कॉस्ट शीट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन करा कॉस्ट अकाउंट कौन ना कॉस्ट अकाउंट होची गोटे टेक्निक जोटा गोटे प्रोसेस ऑफ कॉस्ट को केमिटी डिटरमिन करा जाए केमिटी डिफरेंट प्रोडक्ट रो कॉस्ट डिफरेंट सर्विस रो कॉस्ट एबा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ कॉस्ट ए सब जिंस को हमें कॉस्ट अकाउंट कहता इट इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हाउ फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द कॉस्ट अकाउंटिंग केमिटी हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करिबारे और कॉस्ट को रिड्यूस करिबारे। कॉस्ट अकाउंटिंग होची टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जेकोसी आम गोटे प्रोडक्ट बनौचे तार कॉस्ट को डिटरमिन करवा या जेकोसी सर्विस प्रोवाइड करछे तार कॉस्ट को सदा बेले प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन चाहती मोर प्रोडक्ट रो कॉस्टा कम थाउ और मोर कॉस्टा को मिनिमाइज करा चाहिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करा चाहिए जदि मु वेस्टेज हवा को न देबी ताले मोर कॉस्ट रिडक्शन सब जदि मु कॉस्ट रिडक्शन करछि तमें अधिक हायर प्राइस जब सेलिंग कर पारि तेल मोर प्रॉफिटा अधिक हम राइट तो से सब ऑर्गेनाइजेशन चाहती कॉस्ट को कंट्रोल करें आउ कॉस्ट को रिड्यूस कर कॉस्ट अकाउंट मेन मोटिव होची टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कॉस्ट को आम केमिट कंट्रोल कर वेस्टेज हवा दबानी कि टाइम वेस्ट करने को दबानी को आम कले कॉस्ट को रिड्यूस कर पारिबा। नेक्स्ट व्हाट इज परचेज ऑर्डर कौन ना परचेज ऑर्डर होची गोटे रिक्वेस्ट जोटा कि गोटे परचेज ऑफिसर सप्लायर को गोटे रिक्वेस्ट पठे ताकू को केते क्वांटिटी मटेरियल को क्वालिटी मटेरियल तारे मेंशन सहित से पठे ताकू कह जाए परचेज ऑर्डर तो परचेज ऑर्डर गोटे रिक्वेस्ट सेंड करता है कि गोटे परचेज ऑफिसर सप्लायर को सेंड करता है। नेक्स्ट व्हाट इज टू बिन सिस्टम ऑफ स्टोर कीपिंग व्हाट इज टू बिन सिस्टम ऑफ स्टोर कीपिंग जार अदर नेम होची डबल बिन सिस्टम दीटा बिन थे गोटे होची स्मॉलर गोटे होची लार्जर स्मॉलर बिन रे एटिकी क्वांटिटी रिकॉर्ड कर जाए आउ लार्जर कौन आउ जहाँ रेस्ट रही है तार अदर नेम होची डबल बिन सिस्टम। नेक्स्ट व्हाट इज सेंट्रलाइज परचेजिंग कौन सेंट्रलाइज परचेजिंग होची कौन यदि गोटे डिपार्टमेंट तले सब जिन को आम परचेज करते सेंट्रलाइजिंग परचेजिंग कही था ओके यदि गोटे डिपार्टमेंट तले सब जिन को आम परचेज करते कौन कर सेंट्रलाइज परचेजिंग। नेक्स्ट व्हाट इज इनडायरेक्ट लेबर होचे दुई प्रकार गोटे होचे डायरेक्ट लेबर और होचे इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्टली एंगेज थांती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे बट इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्टली हेल्प करते ओके तुम वाचमैन होगा सुपरवाइजर होगा कुली होगले एम कौन इनडायरेक्ट लेबर ओके। व्हाट डू मीन बाय आउट वर्कर्स कौन आउट वर्कर्स से वर्कर जो मैंने कंपनी आउटसाइड को पठे जाती किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रे या जो कस्टमर किसी जब रिक्वायरमेंट्स अच्छी तो तार प्रेमिसेस को आम वर्कर को सेंड करते हो से कामटा करके आसते कह जाए आउट वर्कर्स। नेक्स्ट व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कौन ना परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हूँ गोटे रेकर्ड बा गोटे टेक्निक जो आम रेकर्ड करता हूँ रिफ्लेक्ट ये मूवमेंट ऑफ स्टॉक आउ करेंट बैलेंस ऑफ स्टॉक गुड्स केते मूवमेंट होची या गुड्स केते करेंटली केते अच्छी ताको हमें रिफ्लेक्ट करता हूँ से केमिट करते हो डिफरेंट स्टोर्स लेजर आम करते हो या बिन कार्ड रे आम रिफ्लेक्ट करते हो आम पाखे केते जिनस अवेलेबल अच्छी और गुड्स मूवमेंट केमिट होची ओके। नेक्स्ट व्हाट डू मीन बाय लेबर टर्नओवर कौन ना परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लेबर टर्नओवर गोटे ऑर्गेनाइजेशन लेबर केते परसेंटेज चेंज होची ताको हमें लेबर टर्नओवर कहते हो फॉर एग्जांपल बिगनिंग रे मो पाखे केते वर्कर अच्छी एंड रे केते वर्कर अच्छी मझे केते वर्कर बाहर कराई केते वर्कर निजे बाहर ये जो चेंजेसटा होची से चेंजेसटा कहते लेबर टर्नओवर ओके। नेक्स्ट व्हाट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कौन वेरिएबल ओवरहेड्स होची गोटे फिक्स ओवरहेड गोटे वेरिएबल ओवरहेड्स और सेमी वेरिएबल फिक्स ओवरहेड होची रिमेन कांस्टेंट जहाँ भी जितने भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो कॉस्टा कांस्टेंट है वेरिएबलटा कौन करता है वैरी करता है और सेमी वेरिएबल किसी पोर्शन फिक्स्ड है किसी पोर्शन वेरिएबल है जो पोर्शनटा वेरिएबल है सीटा बढ़ी है बट फिक्स्डटा फिक्स्ड है ओके किसी समथिंग लिमिट कैपेसिटी पर्यटन से गोटे फिक्स्ड है ओके तापर जब अधिक है तो कॉस्टा बढ़ी है ताको हमें सेमी वेरिएबल ओवरहेड कही था ओके। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग विदिन 50 वर्ड्स भितर आमको लिखार अच्छी 4टा क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन ओटेज होची 3 बार
तो ये 3 मार्क तुमको ऑब्जेक्टिव्स इंपोर्टेंस बोला देथिबो हाउ इज कैलकुलेट अंडर टाइमरी सिस्टम रोजेस केवल कैलकुलेशन करे कि केते टाइम डिवोट करछि से अनुसार में कैलकुलेट करबा व्हाट इज ओवर टाइम जदि एक्चुअल टाइम तो अधिक काम हम करछे बा स्टैंडर्ड एग्जांपल कंपनी रे कोइ 8 घंटा काम करिया पे 8 घंटा 10 घंटा में काम करछे कि 12 घंटा काम करछे ताको हम ओवर टाइम कहतो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट को जेटा डिस्ट्रीब्यूट करते डिफरेंट प्रोडक्शन से डिफरेंट सर्विस से बा डिफरेंट एलोकेशंस कराइते ताको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह जाए व्हाट यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन वन आर्टिकल गोटे आर्टिकल प्रोड्यूस करबे खर्च होची व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग व्हाट इज मटेरियल ट्रांसपोर्ट तो आबिटू हमको चार्ट करार अछि आपको हमको कोन तीनटा चारटा सेंटेंस रे लिखिबार अछि जोटे हमको डिफरेंस ऑब्जेक्टिव तीनटा पॉइंट लिखिबार अछि ओके ये थिला तमरो 3 मार्क क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन ओटे जोची 3 मार्क ओके नेक्स्ट हमें ग्रुप सी करबा जोरा ओटे जोची 8 मार्क जोटे हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करबा चलते अब क्वेश्चन नंबर 5 करवा आमको आज 3टा क्वेश्चन करार अच्छी प्रत्येक क्वेश्चन ओटे जो 8 मार्क सदा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को चेष्टा करियो जो तुमको फुल मार्क मिल पार ओके तो देख लिखाई आंसर इन 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रैकेट लिखाई 8 into 3 ओके नंबर 5 लिखी ए मशीन वाज परचेज ऑन 1 January 2020 फॉर रुपीज 3 लाख आम 1 January 2020 गोटे मशीन परचेज कले जार कॉस्ट होची 3 लाख estimated life of the machine 10 years and the value of the scrap at the end of useful life of the machine is 20,000 से machine टा 10 वर्ष यूज हो और 10 वर्ष पर स्क्रैप वैल्यू जब रियलाइज करछे 20,000 रियलाइज हम ओके इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रुपीज 4,000 पर annum होल ईयर आम मशीन पे इंश्योरेंस खर्च करछे 4,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कंटिन्यूस पर आवर at रुपीज 0.25 पर यूनिट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होची प्रति घंटे 20 यूनिट कंजम्पशन होची और प्रत्येक यूनिट वैल्यू होची 0.25 रेंट पर मंथ 800 रेंट रे खर्च होची 800 रुपीज पर मंथ लाइटिंग चार्जेस फॉर द होल डिपार्टमेंट रुपीज 120 पर मंथ लाइटिंग चार्जेस रे खर्च होची 120 रुपीज पर मंथ आउट ऑफ द 20 लाइट पॉइंट्स फॉर होल डिपार्टमेंट 5 पॉइंट्स आर यूज्ड एज फॉर द मशीन्स पूरा डिपार्टमेंट रे 20 पॉइंट्स यूज होची बट आमे जो मशीन टा यूज करछे तादरे 5 पॉइंट यूज होची ओके तो हमें कैलकुलेशन कला कौन करा 5/20 पूरा होल डिपार्टमेंट 20 पॉइंट यूज होची ता बिटू 5 पॉइंट आम मशीन यूटिलाइज होची रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रुपीज 2,000 पर annum रिपेयर मेंटेनेंस रे खर्च होची 2,000 टंका फोरमैन सैलरी ब्रैकेट देख लिखाई 1/4 ऑफ हिज टाइम स्पेंड द मशीन फोरमैन कौन करछि ए मशीन में 1/4 टाइम डिवोट करछि जाको सैलरी मिलछि 6,000 रुपीज ओके फोरमैन सैलरी 6,000 ओके नेक्स्ट नंबर इछि सॉरी कंप्यूट मशीन आवर एस्टिमेटेड नंबर वर्किंग आवर्स इज 4,000 पर आवर्स पर annum आमको मशीन आवर बाहर कर पूरा होल ईयर 4,000 घंटा काम करछि से मशीन टा ओके तो आमको मशीन आवर बाहर करबा तो देखि पार्टी मशीन आवर फॉर्मेट नु करिछि एके ऊपर लिखिबा मशीन आवर एलो छि पर्टिकुलर्स ना डिटेल्स एरा अमाउंट ओके मशीन आवर बाहर करबे आम पाखे दी प्रकार कॉस्ट थाए गोटे होची स्टैंडिंग चार्जेस आ गोटे होची मशीन एक्सपेंसेस गोटे होची स्टैंडिंग चार्जेस और होची मशीन एक्सपेंसेस ओके मशीन एक्सपेंसेस तीनटा जिनस जाय मन रखिबो गोटे होची डेप्रिसिएशन गोटे होची पावर गोटे होची रिपेयर्स डेप्रिसिएशन पावर रिपेयर्स को छाड़ला पर जो एक्सपेंडिचर सब देखियो ताको हम कोटे पके स्टैंडिंग चार्जेस रे ओके तो फर्स्ट हमको देतला मशीन वाज परचेज 1 January 2020 फॉर रुपीज 3 लाख एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 years and the value of the scrap at the end of useful life of the machine is 20,000 ओके तो फर्स्ट हमें डेप्रिसिएशन बाहर करिबा डेप्रिसिएशन ऑफ फॉर्मूला होची ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट होची 3 लाख स्क्रैप वैल्यू होची 20,000 एस्टिमेटेड लाइफ होची 10 years और एवरी ईयर 4,000 वर्किंग आवर्स ओके ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख टंका तार स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 years हमको रियलाइज होची 20,000 टंका से मशीन 10 वर्ष काम करिवो प्रत्येक वर्ष 4,000 घंटा काम करछि ता माने 2,80,000 डिवाइडेड चार्जेस 40,000 ओके 1,000 कट 0 कट 7 टंका ओके नेक्स्ट डेप्रिसिएशन से गला इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 पर annum इंश्योरेंस रे खर्च होइछि 4,000 टंका इटा डिडक्ट फॉर ईयर इंश्योरेंस रे खर्च होइछि 4,000 टंका राइट नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस जोटा कि हमें पावर कही था
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पावर 20 यूनिट्स पर आवर घंटा को 20 यूनिट कंजम्पशन होची और प्रत्येक यूनिट को 0.25 पावर रूल्स कौन जी यूनिट कंजम्पशन से तार कस्ट पर यूनिट सहित आम मल्टीप्लाई करवा आम 1 आवर 20 यूनिट्स कंजम्पशन करचे लाइटिंग रे इलेक्ट्रिसिटी रे ओके तार प्रत्येक यूनिट कस्ट होची 0.25 तो 20 इंटू 0.25 5 टका ओके। नेक्स्ट रेंट पर मंथ रेंट रे खर्च करचे 800 रुपीज आमको जो पर ईयर देती इंटू करवा 12 तो 800 इंटू 12 9600 आमको वर्ष को रेंट में खर्च करचे 800 रुपीज 800 इंटू 12 कली जेटू आम एनुअल इनफॉरमेशन देती इंटू 12 करदेली। लाइटिंग चार्जेस गोटे स्टैंडिंग खर्च लाइटिंग चार्जेस देती होल डिपार्टमेंट 100 कोटी टका दिया पर मंथ तो 100 कोटी इंटू 12 कर मेंशन करथिला आउट ऑफ द 20 लाइट पॉइंट्स फॉर होल डिपार्टमेंट 5 पॉइंट्स आर यूज्ड द मशीन पूरा डिपार्टमेंट रे 20 पॉइंट यूज होईची बट एई मशीन भाई पर्टिकुलर एई मशीन में 5 पॉइंट यूज होईची तो इंटू करिया 5/20 ओके तो 0 कैंसल्स 2 रे काटली 6 6 5 30 बार 360 टका ओके। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्च होईची 2000 पर एनम रिपेयर खर्च होईची 2000 पर एनम वर्ष को 2000 टका खर्च होईची वर्ष जब 2000 घंटा खर्च हो वर्ष 4000 घंटा काम कर तो पर आवर के आसला 0.50 ओके। मेसीन एक्सपेंसेस 3,000 डेप्रिसिएशन पावर रिपेयर्स मुझे पकईदेली 7 + 5 12 टका 50 पैसा मोर खर्च होती मेसीन एक्सपेंसेस ओके। नेक्स्ट देख रही फोरमैन सैलरी फोरमैन सैलरी को 6000 टका दिखाई सी 1/4 टाइम डिवोट कर 6000 1/4 1500 टका ओके। फोरमैन को सैलरी मिलती 6000 टका पर ईयर जोटे सी ए मेसीन पर्टिकुलर ए मेसीन से 1/4 टाइम से स्पेंड कर ओके तो 6000 1/4 1500 टका कंप्यूटर मेसीन अटे। अब क्या आमको स्टैंडिंग चार्जेस बाहर करार अच्छी स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर SPCH स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर 4000 9000 13600 13600 14100 15100 15460 ओके 000 5 3 8 6 14 1 2 2 4 2 4 6 9 15 15460 15460 को आम 4000 सहित डिवाइड कर जेटू होल ईयर 15460 टका खर्च होती आउ प्रति वर्ष 4000 घंटा काम कर तो 15460 डिवाइडेड बाय 4000 3.86 मोर स्टैंडिंग चार्जेस रे पर आवर खर्च होला 3.86 मोर मेसीन एक्सपेंसेस रे पर आवर खर्च होला 12 टका 50 पैसा प्लस करा 12 टका 50 16.36 एटा मोर कौन वाला MHR मेसीन आवर गोटे मेसीन गोटे घंटा जब चलुची तापे खर्च केते होची 16.36 ओके। सदा मन रखियो मेसीन आवर डी प्रकार कॉस्ट है गोटे होची स्टैंडिंग चार्जेस गोटे होची मेसीन एक्सपेंसेस गोटे होची स्टैंडिंग चार्जेस और होची मेसीन एक्सपेंसेस। मेसीन एक्सपेंसेस 3 टाइम्स हो जाए गोटे होची डेप्रिसिएशन गोटे होची पावर गोटे होची रिपेयर्स। डेप्रिसिएशन फॉर्मुला मन रखियो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन्स ओके जेतिकी वर्ष काम करथिबो इनटू करियो प्रति वर्ष केतेटा काम करछि। पावर रूल्स कौन केते यूनिट आम कंजम्पशन कले और कस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करवा। रिपेयर डिपेंड अपॉन फैक्ट केते रिपेयर खर्च होची वर्ष को केते काम कर राइट यही 3टा कस्ट गला पर जहाँ भी रहा लाइक तुम रेंट रेट इंश्योरेंस तुम मिसलेनियस एक्सपेंसेस तुम फोरमैन सैलरी लाइटिंग चार्जेस ये सब जिन पड़ जाए स्टैंडिंग चार्जेस तो इंश्योरेंस होता 4000 पर ईयर रेंट खर्च होता 800 पर मंथ इंटू 12 करवा 9600 लाइटिंग चार्जेस खर्च होता 120 डिपार्टमेंट इंटू 12 कली होल डिपार्टमेंट 20 पॉइंट्स यूज होती बट पर्टिकुलर मेसीन 5 यूनिट यूज होती तो आसला 360 फोरमैन को 6000 सैलरी उठले पर ईयर से पर्टिकुलरली ए मेसीन 1/4 टाइम डिवोट कर 1500 टोटल स्टैंडिंग चार्जेस खर्च है 15460 ताकू वर्किंग आवर्स डिवाइड कली मोर पर आवर खर्च है 3.86 मेसीन एक्सपेंसिव पर आवर खर्च होता 12.5 तो टोटल मेसीन आवर खर्च है 16.36 तो ये मेसीन आवर बाहर कर चलतु अब नेक्स्ट नंबर करवा क्वेश्चन नंबर 5 सरला पर क्वेश्चन नंबर 6 रे थ्योरी अच्छी देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू आमको 4टा क्वेश्चन देखिए जेकोसी डिस्टिंग्विश 2टा करार अच्छे क्वेश्चन अच्छे जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग बिटे डिफरेंशिएट कर पारिबो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बिटे डिफरेंशिएट कर पारिबो FIFO एंड LIFO मेथड यूजिंग ऑफ प्राइस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में डिफरेंशिएट कर पारिबो एलोकेशन अपॉर्चुनिटी तो आप जेकोसी 2टा कर पारिबो बट सदा मु कहि होचे
तुम्हें जब 3टा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करछ तो 3टा प्रैक्टिकल फुल मार्क तुम्हें पाई परिबो ओके थ्योरी में भी किसी काटी दे पारंती किंतु प्रैक्टिकल फुल मार्क पाइबो ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 रे हमको मेंशन आवर थिला क्वेश्चन नंबर 6 हमर थ्योरी छी क्वेश्चन नंबर 7 रे हमको गोटे कस्ट शीट बनावे छी आ क्वेश्चन नंबर 9 रे हमको आंसर रहल तमे 3टा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देछि तमे 3टा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करबा ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चला वे नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 करबा The following figures relate to two jobs of manufacturers business. Job number 1, job number 2, दीटा जॉब अच्छी पर्टिकुलर जॉब नंबर 1 केते एक्सपेंसेस सबसे देछि डायरेक्ट मटेरियल खर्च होइछि जॉब नंबर 1 900 जॉब नंबर 2 1200 डायरेक्ट लेबर खर्च होइछि 600 जॉब नंबर 2 रे 900 चार्जेबल एक्सपेंसेस रे खर्च होइछि 100 और 300 ओके नेक्स्ट देछि वर्क्स ओवरहेड एंड कॉस्ट इज 50% प्राइम कॉस्ट वर्क ओवरहेड खर्च होइछि प्राइम कॉस्ट ऑफ 50% ऑफिस ओवरहेड खर्च होइछि 10% वर्क कॉस्ट फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब रो टोटल कॉस्ट हमें डिटरमाइन करबा ओके तो हमको इटी गोटे लिखिबा जॉब नंबर 1 इटा जॉब नंबर 2 ओके इटा जॉब कॉस्ट शीट इटा होछि पर्टिकुलर्स ओके तो हमको डायरेक्ट मटेरियल खर्च होइछि डायरेक्ट मटेरियल जॉब नंबर 1 है 900 रुपीज एटी 1200 देन डायरेक्ट लेबर खर्च होइछि 600 एटी 900 देन चार्जेबल एक्सपेंसेस देछि चार्जेबल एक्सपेंसेस 100 और 300 ओके डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एग्रीगेट रे हमको प्राइम कॉस्ट बाहरते हैं तो 3टा को मैं प्लस कर देवा जोटा कि मोर प्राइम कॉस्ट बाहर ओके 900 1500 1600 एटी 1221 2400 टका राइट नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट बाहर कर साल पर हमें कौन करिबा फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करिबा फैक्ट्री ओवरहेड ओके फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट जॉब नंबर 1 रो 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट तो 50/100 प्राइम कॉस्ट ला 1600 50% माने हाफ 800 टका जॉब नंबर 2 50% ऑफ 2400 और 50% 1200 राइट दीटा को प्लस कर देबा कौन बाहरिबो ना वर्क कॉस्ट बाहरिबो ओके 1600 रे 800 प्लस करली मोर आंसर वाला 2400 टका 2400 रे 1200 ऐड करली मोर आंसर वाला 3600 टका राइट एटा मोर कोन वाला वर्क कॉस्ट हमको मटेरियल देतिला लेबर देतिला चार्जेबल एक्सपेंसेस देतिला 3टा को प्लस करली जोरे कि मोर प्राइम कॉस्ट वाला वर्क्स ओवर देतिला 50% ऑन प्राइम कॉस्ट ऊपर 50% तो एठी मोर प्राइम कॉस्ट 1600 बाची तारो 50% 1600 50% मतलब हाफ 800 2400 रो 50% होची 1200 ओके तो वर्क कॉस्ट जॉब नंबर 1 वाला 2400 जॉब नंबर 2 वाला 3600 ओके नेक्स्ट आम ऐड करवा ऑफिस कॉस्ट देछि बा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर ऑफिस कॉस्ट लिखी 10% ऑन वर्क कॉस्ट 10% ऑन वर्क कॉस्ट ऊपर 10% तमाने जॉब 1 जॉब नंबर 1 रो वर्क कॉस्ट ला 2400 तार 10% 240 टका जॉब नंबर 2 वर्क कॉस्ट ला 3600 तार 10% 360 टका ओके 2400 प्लस 240 2640 टका 3600 3960 टका हमको ये टोटाल कॉस्ट बा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहि परिबा आउ किछि इनफॉरमेशन देन माने आपको हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बा टोटाल कॉस्ट भी कहि परिबा ओके हमको बाहर करथिला टोटाल कॉस्ट फॉर ईच जॉब रो टोटाल कॉस्ट ओके तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर चार्जेबल एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट वाला प्राइम कॉस्ट रे मु फैक्ट्री ओवरहेड जोटा कि 50% प्राइम कॉस्ट देथिला 800 तार वाला 1200 तो वर्क कॉस्ट वाला 2400 एंड 3600 देन ऑफिस कॉस्ट देथिला 10% वर्क कॉस्ट जेति का मु वर्क कॉस्ट देछि तार 10% 2400 10% 240 टका जोटी टोटाल कॉस्ट वाला 2640 टका 3600 10% 360 3960 ए बोली हम जॉब कॉस्ट रो टोटाल कॉस्ट को डिटरमाइन करिवा चलो नेक्स्ट नंबर करिया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी डिस्कस द परचेज प्रोसीजर डिफरेंट परचेज प्रोसीजर डिस्कस करिया रही जोटा कि थ्योरी पार्ट अच्छी ओके नेक्स्ट नंबर करिया क्वेश्चन नंबर 9
From the following information given below, calculate earnings of each employee under Halsey premium bonus plan, Rohan premium bonus plan. हमको हालसी और रोहन प्रीमियम बोनस प्लान रे अर्निंग्स ऑफ वर्कर बाहर करिया ओके तो हमको दीटा एम्प्लॉय अछंती ए और बी जोटी इनफॉरमेशन देछि टाइम अलाउड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स 100 यूनिट बनिया पे एम्प्लॉय ए 35 घंटा नउछि एम्प्लॉय बी को दियाछि 40 घंटा वेजेस दियाछि 2 पर यूनिट बी रहउछि 3 पर यूनिट आवरली रेट होछि 7 बी रहउछि 8 एक्चुअल टाइम टेकन 50 आवर्स 48 आवर्स एक्चुअल टाइम दे दिछि एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 200 और 150 तो हमको अर्निंग्स ऑफ वर्कर बाहर करियर अछि तो हमको इनफॉरमेशन दी स्टैंडर्ड टाइम आगे एम्प्लॉय ए रो बाहर कर देबा एम्प्लॉय ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 35 आवर्स बट से एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस करछे 200 एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स ओके तमने स्टैंडर्ड टाइम पर 100 यूनिट्स चला है स्टैंडर्ड टाइम पर 100 यूनिट्स तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट्स बाहर करिबा यदि 100 यूनिट्स को 35 घंटा नउची तो हमें कोन करिया ना 35 बाय 100 इनटू 200 तमने 70 आवर्स ओके 70 आवर्स हमको एस मिल गला जोरा कि स्टैंडर्ड टाइम होची 70 आवर्स एक्चुअल टाइम जोरा कि टी जोरा कि एक्चुअल टाइम से नहीं 50 आवर्स इज इक्वल टू 50 आवर्स ओके और आर रेट ऑफ वेजेस होची आर जोटा कि होची 7 रुपीज पर आवर 7 पर आवर इटा होची एम्प्लॉय ए रो एम्प्लॉय बी रो बाहर करियो एम्प्लॉय बी रो स्टैंडर्ड टाइम देइतला स्टैंडर्ड टाइम फॉर 100 यूनिट्स इक्वल टू 40 आवर्स एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड 150 एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड 150 यूनिट्स ओके तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 150 यूनिट्स यदि 100 यूनिट को 40 घंटा रोचे तो 40 बाय 100 इंटू 150 ओके 00 कट 00 कट 1560 60 आवर्स तमन तुमको एस मिला 60 आवर्स एक्चुअल टाइम रखी टी तुम देखिए 48 आवर्स आउ वेजेस जोटा कि आर देखिए 8 रुपीज पर आवर 8 पर आवर ओके तो हमको इनफॉरमेशन देथिला एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी दीटा एम्प्लॉय अछंती जे स्टैंडर्ड टाइम देथिला एम्प्लॉय ए रा 100 टा यूनिट प्रोडक्शन करिया को 35 घंटा समय नउचंदी 100 टा यूनिट प्रोडक्शन करिया को 35 आवर्स नउचंदी तले मेंशन करथिला एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस होची 200 से 200 टा यूनिट प्रोडक्शन करची तो 200 टा यूनिट प्रोडक्शन करिया पे केते समय लगबो यदि 100 टा यूनिट को 35 घंटा तो 200 टा यूनिट प्रोडक्शन पे 70 आवर्स त माने मते स्टैंडर्ड टाइम मिलला 70 आवर्स बट से टाइम सेव करची से एक्चुअल से कमाटा को ना 50 आवर्स में कंप्लीट कर देची तो एक्चुअल टाइम है 50 आवर्स जोटा कि टी रेट ऑफ वेजेस देची 7 रुपीज पर आवर ठीक से भाई एम्प्लॉय बी 100 टा यूनिट बना को 40 घंटा नौला 40 आवर्स नौला से 150 टा यूनिट प्रोडक्शन करची 150 टा यूनिट प्रोडक्शन करबा को 60 आवर्स समय लागिवो आ से बट 40 आवर्स में काम कंप्लीट कर देची तार रेट पर आउची 8 रुपीज ओके हमको दीटा प्रीमियम बोनस सिस्टम रे बाहर करिया अछि ओके एम्प्लॉय ए हालसी प्रीमियम प्लान हमको 50 हालसी प्रीमियम प्लान हालसी प्रीमियम प्लान जार फॉर्मूला होची टी इंटू आर प्लस परसेंटेज एस माइनस टी इंटू आर ओके टी होची एम्प्लॉय रो 50 आवर्स आर होची 7 रुपीज 15 to 7 प्लस परसेंटेज 50 by 100 एस माइनस टी एस होची 70 आवर्स टी होची 50 आवर्स आर होची 7 15 to 7 350 प्लस 1 by 2 इंटू 20 इंटू 7 350 2 रे काटे 10 10 into 7 70 आंसर इज 420 ओके
2 रे काटिले 10 10 मिशन 70 हमको टी देइतला हमको आर देइतला हमको एस भी देइतला तो केवल फार्मूला पुट करली हालसी प्रीमियम प्लान रे तार एम्प्लॉय इनकम करियो 420 रुपीस सेम जिनस रोहन प्रीमियम प्लान जार फॉर्मूला होची टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी बाय एस इंटू टी इंटू आर ओके रोहन प्रीमियम प्लान फॉर्मूला को ना टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी बाय एस इंटू टी इंटू आर टी केटे अच्छी 50 आर होची 7 70 माइनस 50 बाय 70 ओके इंटू 50 इंटू 7 50 इंटू 7 350 प्लस 7 to 50 होगा 20 बाय 70 इंटू 350 0 0 कट 7 कटली 5 20 इंटू 500 350 प्लस 100 आंसर इज 400 तामाने एम्प्लॉय ए हालसी प्रीमियम प्लान रे 420 रुपीस इनकम करिवो रोहन प्रीमियम प्लान रे 400 रुपीस अर्निंग करिवो ओके नेक्स्ट आम एम्प्लॉय बी रे बाहर करिवो एम्प्लॉय बी हालसी प्रीमियम प्लान जार फॉर्मूला होची टी इंटू आर प्लस परसेंटेज एस माइनस टी इंटू आर ओके एम्प्लॉय बी रा इनफॉरमेशन देखियो एम्प्लॉय बी रा टी होची 48 आवर्स आर होची 8 रुपीस पर आवर प्लस परसेंटेज 50 बाय 100 एस माइनस टी 60 माइनस 48 60 माइनस 48 इंटू आर होची 8 ओके 8 64 4 6 8 32 6 384 ओके प्लस 1/2 60 और 40 12 इंटू 8 2 रे कटली 4 384 प्लस 12 48 8 12 8 12 के 13 432 हालसी प्लान प्रीमियम रे एम्प्लॉय भी 432 रुपीस इनकम करिवो नेक्स्ट हमको बाहर करे छी रोहन प्रीमियम प्लान जार फॉर्मूला टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी बाय एस इंटू टी इंटू आर टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी बाय एस इंटू टी इंटू आर टी होची 48 आवर्स आर होची 8 रुपीस पर आवर एस होची 60 माइनस 48 बाय 60 इंटू 48 इंटू 8 48 इंटू 8 होची 384 ओके 12 बाय 60 इंटू टी इंटू आर 384 बारे कटेली 5 5 35 3 34 530 4 5 76.8 ओके 384 बाय 5 4 divided by 5 76.8 plus 384 आंसर होची 460.8 ओके तो इतला इनफॉरमेशंस आमको एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी दीटा एम्प्लॉय को इनफॉर्मेशन देइतला ताकर स्टैंडर्ड टाइम थिला 30 आवर्स पर 100 यूनिट्स से 200 यूनिट प्रोडक्शन करतला से स्टैंडर्ड टाइम वाला 70 आवर्स एक्चुअल से 50 आवर्स से कंप्लीट करछि तार रेट थिला 7 पर आवर तो सी हालसी प्रीमियम प्लान में 420 रुपीस इनकम कला और रोहन प्रीमियम में 400 रुपीस इनकम कला एम्प्लॉय बी रा 100 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड टाइम थिला 40 आवर्स बट से एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस करतला 150 यूनिट्स से तार 150 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड टाइम थिला 60 आवर्स बट कामटा को कंप्लीट करतला 48 आवर्स रे तार वेजेस थिला 8 रुपीस पर आवर तो हालसी प्रीमियम प्लान रे से 432 रुपीस इनकम कला रोहन प्रीमियम प्लान रे से 460.8 रुपीस इनकम कला तो ये थिला हालसी रोहन रे अर्निंग सिस्टम आई होप आप वीडियो भल लगी आ किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड करथिबो आज वीडियो माध्यम रे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 को सॉल्व कले यदि ए रिलेटेड आपन किसी डाउट हो तो मते कमेंट सेक्शन में पचार पारिबे थैंक यू।